So here, so here in the question it is given that the car is moving with a speed of 30 meter per second on a circular track. तो circular track में हम लोग का दो force होता है जो कि होता है centripetal and force of tangential. तो force of tangential is the speed of the car. तो यहाँ पे speed of the car लिखा है 2 meter per second and speed of the car 2 meter. Yes sir. मतलब speed is increasing at the rate of 2 meter per second. तो उसका tangential यो speed लेकिन ये प्रॉब्लम गलत हो जाएगा ना. स्पीड बोला और यूनिट देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है. पीओ एक्सीलरेशन दिया है. यो आर यू देयर? Yes sir. स्पीड बोला है ना. स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट. वहां पे उन्होंने बोला मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये तो गलत हो गया ना. हाँ गलत हुआ सर. एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इज 2 मीटर पर सेकंड. अरे तो उसको स्पीड थोड़ी बोलते हैं. Read the question. You read the question. You are doing it. घाई करोगे तो वैसे ही होगा ना. पहले क्वेश्चन को रीड तो करो. The second statement says its speed is increasing at the rate of 2 meter per second square. यो तो मुझे बताओ क्या स्पीड वर्ड इज करेक्ट या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज करेक्ट. अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए तो वो एक्सेलरेशन होगा. और अगर स्पीड करेक्ट है तो 2 मीटर पर सेकंड. तो 2 यू सेड 2 मीटर पर सेकंड. Oh sorry, I mean to say 2 meter per second square. So it is not speed, it is acceleration. Yes sir, tangential acceleration. लेकिन the word given over there is speed is increasing. It means it is tangential acceleration in a circular path that we. Students, how can you say if the word written as speed is increasing, how can you change that speed to acceleration? Is v is equal to a? No sir. Then what are you doing? Is anybody else? Any of the students? Neha, Akshat, Anaita, Arif, Nizar, Mariam, Rishika, Taksh, Veer, anyone? Valentino, anybody? Yeah, tell me anyone. Sir, can I answer? Yeah, bolo. So we are provided with acceleration tangential, as PU said. It is 2 meter per second square. So, and we are provided with the velocity as well, or you can say speed, and the radius is given as 500 meter. So we did a similar question and the objective as well. No, but my question is the statement it is its speed is increasing. How can speed is increasing and the unit is 2 meter per second square? So it said speed is increasing at the rate. If Very good. Very good. Very good. This is what I wanted. Very good, Anaita. Students, यहाँ पे देखो.
क्लियरली लिखा है speed is increasing at the rate of, यानी v by t दिया है स्टूडेंट्स, and that v by t is meter per second upon second, that is meter per second square, and that is 2 meter per second square. तो ये होगा तुम्हारा tangential acceleration. Got it, PU now? So now how can you say v is equals to a? Where did I say v is equal to a? V by t is equal to a. Read the statement. Its speed is increasing at the rate of. Yes, sir. PU, आर्ग्यू करो, तुमने वैसे ही है, लेकिन तुम रीड नहीं करते हो ध्यान से. Are you getting it? See students, when you're solving problems, it's not like that कि it's an identity. जानबूझ के मैंने वहां पे नहीं बताया. Please, students, you all still don't know me what exactly I do it. I deliberately didn't say it over there because I want to see that, and the question comes again, how many of you all are thinking onto it? अगर मैं चाहता तो वहीं तुम्हें ये बता देता, मैंने जानबूझ के नहीं बताया वहां पे उसको मैं एक्सेलरेशन टैंजेंशियल लिया क्योंकि मैंने तभी यूनिट के ऊपर स्ट्रेस किया था. मैंने स्टेटमेंट के ऊपर स्ट्रेस नहीं किया जानबूझ के. मैंने तो बोला मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, एक्सेलरेशन टैंजेंशियल हो जाता है. बट नाउ व्हेन आई मेड यू टू थिंक ऑन टू दिस, यू आर कंफ्यूज विद दिस. नाउ यू विल से कि आई कंफ्यूज. Yes, I confuse characters. That is very true. So students, whenever questions have been given to you, you have to read it very carefully. Don't think that all questions are identical first of all. Whenever you select any problem or read it, उसको बहुत ध्यान से read करो, हर एक word को अच्छी तरह से read करो. And that's why students, whenever you solve multiple choice questions, you should make a habit of highlighting important words. Now, if I want to say, I'll say speed 30, circular, radius 500, speed increasing rate 2 meter per second square. That's your highlighting part. So now your problem becomes exactly identical to what you said it previously, and what you said is absolutely correct. इसके बाद में she took this as acceleration tangential and acceleration centripetal. तो सबको पता है what exactly acceleration centripetal is. Acceleration radial, that is v square by r, and that is given to us how much? It's 30 square upon 500. That many meter per second square. So now the body is having two accelerations. So पूछा है the value of the net acceleration. So the net acceleration will be its magnitude. So under root AR square plus AT square. And students, have you solved? Anyone else has solved it? You guys got the answer for this. Yes, And I solved it as well. What's the answer? So approximately 2.7 meter per second square. Yes, sir. And what made PU to give the answer? 4.7. PU, तुमने क्या किया Sir, मालूम है? I said to. Sir, अच्छा, root typing is there. 4.7. Oh, shit. No, I said question number 4 का answer is 2.7. No, my dear, you have texted over the 4.27 meter per second square, my dear. Sir, it's question number 4 and then that's answer is 2.7. I mean that way. But you didn't say that to you. 4.2. मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ direct message तुम्हारा भी मेरे सामने रखा हुआ है. Why you do like that? Why you do like that always? तुम तुम्हारी तंगड़ी ऊपर की ऊपर ही रखना चाहते हो. ऐसे ऐसे क्यों यार? Didn't you put down the text as 4.27? हाँ या ना बोलो. No, sir. You didn't write down. You didn't give a text to me as 4.27. You have given a direct message to me. Sir, I'll take a screenshot. No, now I'm going to take a screenshot of this and I'm going to send it to the group again. I'll put it into the group along with the name. This is not done. And students, see one thing. 4.27 वो previous question का था, और अगर तुम वहां से डायरेक्टली उठाते हो लेकिन तुमने ध्यान से रीड नहीं किया, वहां पे वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया था टेंजेंशियल, और यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया.
Students, observation is very important in life. So what if the problem is exactly identical? You can't just jump to it straight away. So always whenever you do physics, students, you have to be very careful in solving physics. Okay, students, so the answer will be simply, we consider this will be 2 square plus this will be 900 upon 5. Are you getting it? So that will be 9 by 5 the whole square. Solving it further, you'll be getting the answer in terms of root of 4.27 we consider, and then you'll be getting the answer accordingly. Okay, students, can you give an answer for the sixth one? I never expected that you will say like that. Yes, students, sixth one, anybody else? Find the maximum speed at which the car can turn around a curved 30-meter radius on a level road. The coefficient of friction between the tires and the road is given to you. Yes, anybody, students? Absolutely correct, Neha. Can you explain, Neha? Yes, Neha, can you explain? Since this part of the derivation was already given to you. Force of static friction is equal to force centripetal. Students, for a car to move on a circular road, and we have derived this equation also. Students, your answer will be V is equal to under root mu RG. Find the maximum speed at which a car can turn around a curve of 30 meters on a level road. Coefficient of friction between the tires and the road is given to you, and G is given to you. This was a straightforward question. A straightforward formula. Force of static friction is equal to mu s, we consider, into the normal reaction force. And normal reaction force is mg. Force of centripetal is mv squared by r. Mass will get cancelled. I need to get v. What is v is equal to under root mu rg? That's your answer. Is mu given to you? Yes, 0.4. What is r given to you as 30? And how much is g given to you as 10? Solving it, you'll be getting the answer, students. Okay, so it's 4 is 12, root of 120. 11 square is 121, students. So the answer will be just less than 11. 10.9 something you'll be getting it approximately. Yes, sir, 10.95. Yes, Neha's got the answer. And students, you should know these questions. I've given you so that you will be able to crack it by yourself, students. Okay, ninth was ninth. Who wants to answer? Yes, answer. Sir, 1 second, sorry.
What? 1 second. 1 second. Okay, who's raising hand? You is raising hand. And he has given the answer. Yes, Piyu bolo. Sir, I should say the answer. No, the solution. First, we will draw the free body diagram of the insect. So it will be उसका खुद का weight mg and then normal reaction force acting n, and then if we resolve What is the direction mg, of mg acting? What is the direction of mg acting? so downwards. Okay, always vertically downwards. And what is the normal reaction force? ऊपर मतलब that line which is joining to the center. Okay, it's normal reaction force, students, is always passing through the center of gravity perpendicular to the surface in contact. Okay, that's your normal reaction force. Okay, now. So if we see in this diagram, the insect is performing simple harmonic motion. So इसका कुछ friction होगा, that is mu n. And then if we resolve mg, we will get mg cos alpha and mg sin alpha, right? And then उसके बाद हाँ, then I equated sir. Which is this component? Which is this component? These are the two perpendiculars you mean to say? Yes, sir. Yes, sir. And this is center. So this angle is theta. हाँ, alpha it is given. Okay, alpha. So this is mg cos alpha. Cos alpha. हाँ. mg sin And alpha. mg sin alpha. Okay. Now we will equate. So mg sin alpha, which will give us mu of mg cos alpha. So from there, mg got cancelled, and cos alpha sin alpha will be tan alpha, which is equals to mu. So here in the question, mu ka value is given as 1/3. So if we inverse tan. What you said it? What you said it? Mg sin alpha is equal to mg cos alpha. Mg sin alpha is equals to mu of mg cos alpha. Mu of mg. How do you get this? So we know that. ये कैसे इक्वेट हुआ? mg sin alpha तो इस तरफ जा रहा है ना? Sir, because n is equal to mg cos alpha, so when you do mu n, you get that. Absolutely correct. Students, ये जो balancing forces है ना students, अगर सपोज फ्रिक्शन इतना सही नहीं होता तो mg sin alpha की वजह से वो बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है, यानी force of friction is going to act in this direction. Force of friction is acting. अगर बॉडी स्लाइड होकर नीचे आएगा तो force of friction उस तरफ जा रहा है, यानी पहले बैलेंसिंग फोर्सेस ले लो ना. तो mg sin alpha is equal to force of static friction, and mg cos alpha is nothing but balancing normal reaction force. Now when I take this, so what exactly mg sin alpha is equal to force of static friction. What's the formula of force of static friction which you have learned it in friction? It's mu s into n, and n you know it is this. Therefore, one can write down as mg sin alpha is equal to mu into mg cos alpha. Now mg will get cancelled, so tan alpha is equal to mu. What's the question asked? Alpha. So what is the answer of alpha? Yes, you. What is So the we answer have of to alpha? inverse tan alpha. That is equal to 1/3. So alpha will be tan inverse of 1. 1/3. Correct.
Sir, which will give us cot alpha is equals to 3. मुझे वो चाहिए ही नहीं ना, मुझे अल्फा चाहिए, कॉट अल्फा की जरूरत क्या है? अच्छा, okay. तुम क्या कर रहे हो तुम? You are trying to go for identical questions or what, which you're seeing it earlier and then you are answering. Is it so? Because previously also you did the same mistake. And you're saying it was a misunderstanding or misprint or whatever it is. Over there, the answer was 4.27. And now also you're saying it over there, the answer was cot. But यहाँ पे वो नहीं पूछा है. यहाँ पे alpha पूछा है sir. So tan inverse of 1/3. And friends, when such kind of questions come, they will not ask you, the options will be given to you in terms of tan inverse itself only, students. लेकिन अगर एंगल पूछा होगा तो तुम क्या करोगे? वहां पे तुम्हें ऐसे क्वेश्चन देंगे जहाँ पे वियर्ड होगा. They might give you certain angles which are standard ones, with 30 degrees, 45, 60, yeah, 53, yeah, 27. These are the ones which a student should know it. Sir, Yeah. sir, I have a doubt. अरे बोलो. अच्छा आप रुके हो सुनने. हाँ सर, सॉल्व एग्जाम्पल में थर्ड एग्जाम्पल नहीं समझ रहा. अच्छा है. कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 83. तो वही नहीं समझ रहा. पेज नंबर 83 में सॉल्व एग्जांपल में कौन सा वाला? थर्ड. हाँ, तो ये तेरा ये फॉर्मूला यू आर नॉट एबल टू गेट इट. ये जो है दिस हैड गिवन यू द फॉर्मूला. उसमें लेंथ cos थीटा माइनस थीटा नॉट क्यों होगा वो नहीं समझ रहा. नहीं, ये पहले तो तेरे को इक्वेशंस समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड द इक्वेशंस? मतलब मैंने इतना वो नहीं देखा, नीचे का नहीं देखा. बाकी तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आ जाएगा. यस खुशी, खुशहाली, यस खुशहाली. अभी तो यहाँ पे देखिएगा ना, तो व्हाट एग्जैक्टली दे गिवन इन टर्म्स ऑफ ये जो हाइट दिया है ना, इन टर्म्स ऑफ, अगर सपोज मैंने तुम्हें को फॉरगेट अबाउट दिस, अगर मैं सपोज मैं ये तेरे को ऐसा 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 पाथ दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, दिस इज अ पाथ. ये तेरा एक पोजीशन, इफ आई हैपन टू कंसीडर, एक ये थीटा के हिसाब से आई एम ट्राइंग टू गो फॉर दिस. ओके, लेट अस से दिस इज थीटा 1. ओके, और ये तेरा मैंने दे दिया. सपोज अगर मैंने ये पूछा हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, गेटिंग इट? ये टोटल, ध्यान से सुना, ये टोटल मैंने दे दिया तेरे को कैपिटल एच. आई गेटिंग इट? हाँ सर. ओके, और इसको मैंने दे दिया स्मॉल एच. ओके, ये h1, स्मॉल h1. तो ये क्या बन गया? कैन यू टेल मी? एच नॉट. वो h टू गो ऑन टू योर इंस्टिंक्ट, ये h माइनस h1 हो जाएगा. आया ना? ये 90 डिग्री हुआ तेरा. एग्रीड? यस सर. अभी ये भी तेरा h हो जाएगा क्योंकि ये रेडियस है. हाँ. तो नाउ अगर मैं cos थीटा 1 लेता हूं तो व्हाट इज cos थीटा 1? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. यस. अभी तक सपोज अगर मैंने ये तेरा h1 ले लिया टू मेक इट मोर इजियर, चलो ये मैंने h1 ले लिया,
ये मैंने h1 लिया तो ये क्या हो जाएगा, h माइनस h1 हो जाएगा। एग्रीड। यानी फॉर वैल्यू ऑफ θ1, for value of θ1, the body is over here when it is oscillating, its position from the ground is h1. What is cos of θ1? Cos of θ1 will be adjacent upon hypotenuse. तो ये तुम्हारा इक्वेशन cos of θ1 क्या हो जाएगा, 1 minus h1 by h। ये तेरा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। एग्रीड। हाँ सर। अभी दूसरे केस में क्या किया मालूम है, अगर मैं ये पूरा एंगल ले लेता हूँ, ये θ2 ले लेता हूँ, समझ में आ रहा है? तो यहाँ से अगर तू परपेंडिकुलर देखिएगा तो ये हो जाएगा, ग्राउंड से ये वाला हाइट हो जाएगा ना फिर। हाँ तो अगर इसको मैं h2 ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, हाउ मच इज दिस, h माइनस h2, हाँ h माइनस ये H2 h2 हो जाएगा। यानी नाउ इफ आई से ये तेरा h ही है, ये तो डिस्टेंस h ही है। अभी देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल लेना स्टूडेंट, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ और ये पूरा एंगल कितना हुआ, θ2। तो नाउ कैन आई से व्हाट इज कॉस ऑफ θ2, बोलेगा सर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। H2 upon H। मेरे को डिफरेंस पूछा गया, व्हेन यू लुक ओवर हियर सो इट्स cos ऑफ θ2 माइनस cos ऑफ θ1 पूछा गया। आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पे तो देखिएगा तो 1 माइनस h2 by h हो जाएगा, क्योंकि ये θ2 इज ग्रेटर देन θ1। आई वांट टू फाइंड आउट द डिफरेंस, ये पार्ट मुझे चाहिए। तो अगर दोनों के बीच में डिफरेंस लूंगा तो इट विल बी 1 माइनस h2 by h माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया। तो कहने से cos ऑफ θ2 minus cos of θ1 is equal to what, h1 minus h2 by h। समझ में आ रहा है? जी सर। That's how they've given. So the difference in the height you're getting it. And अगर तू देखेगा ना h1 minus h2 क्या होगा, ध्यान से देखना, ये पूरा h1 है, are you getting it? और ये h2 है, ध्यान से देखना, ये h2 है, ये h1 है, इसको उन्होंने ये पार्ट को ले लिया है स्मॉल h। अगर तो ध्यान से डायग्राम को देखिएगा तो ये हाँ पोर्शन को स्मॉल h लिया, यानी इसको इन्होंने क्या लिखा है, तो उनका फॉर्मूला क्या आया है, स्मॉल h कैपिटल H cos ऑफ θ2 माइनस cos ऑफ θ1। और कैपिटल H को उन्होंने क्या ले लिया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी L डाल दिया वहां पे। हाँ सर। Agreed? हाँ और दूसरा वेलोसिटी क्या है, यही दो इक्वेशन है, एंड देयर इज टेंशन T minus mg cos θ is equal to mv square by r। टेंशन at any instantaneous position, it was an easy question। और सर, अगर तू ऊपर वाला ये जो पार्ट था ना वही नहीं समझा था। लेकिन अभी क्लियर हुआ, वापस अगर होगा तो पूछ करके, ये h2 है, ये h1 है, तो मैंने क्या किया, मैंने cos θ1 निकाला, फिर cos θ2 निकाला। Are you getting it? θ1 again I'm telling you it's adjacent upon hypotenuse। तो मुझे एक रिलेशन मिला, cos θ2 के लिए मेरा adjacent ये होगा, hypotenuse ये होगा। फिर मैंने क्या किया है, θ2 is greater than θ1, तो दोनों का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस से मुझे h1 minus h2 मिला। तो h1 क्या है, sorry I'm getting it as yes, I'm getting it, this is h1 and this is h2, I'm getting it। So if in case if I happen to consider, I can get the answer accordingly। Is that clear? हाँ सर। And when you look into it students, when you look into it, यहाँ पे तुम्हारा सिंपली ये h को l ले दिया है। दूसरा इक्वेशन दिया है वेलोसिटी। अगर तुम वेलोसिटी के बारे में देखोगे ना तो वेलोसिटी को कैसे दिया मालूम है, v। और ये कंसेप्ट मैंने बताया भी है स्टूडेंट्स। अ बॉडी व्हेन ऑसिलेटिंग, कैन यू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी? यस, एट एन इंस्टेंटेनियस पोजीशन। हम लोगों ने कौन सा यूज किया था, मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर सपोज मैं बॉडी को ऑसिलेट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इफ अ बॉडी इज मेड टू ऑसिलेट, दिस इज थीटा, let's say the body is at any instantaneous position is over here। ये तुम्हारा L मैं ले लेता हूँ, इसको मैंने H ले लिया है, ये L हो जाएगा, तो ये कितना होगा, L माइनस H, ये 90। अभी बॉडी यहाँ पे है, बॉडी ऑसिलेट हो रहा है, तो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट B होगा। अगर मैंने पूछा व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बिकॉज द बॉडी इज ऑसिलेटिंग, इट्स परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन में, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी एट पॉइंट B? तो जब भी वो ए से पास होगा तो इसको हम लोग ने ग्राउंड ले लिया स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं क्या लूंगा, यहाँ पे इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी,
So total mechanical energy at point A is equal to total mechanical energy at point B. At point A कौन सी एनर्जी होगी? सिर्फ काइनेटिक होगी, क्योंकि वो लोवेस्ट पोजीशन पे है। पोटेंशियल तो होगा नहीं, क्योंकि हमने ग्राउंड ले लिया इसको। इज़हार समझ में आ रहा है? हाँ इसको अगर मैं ग्राउंड को कर रहा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा नहीं, सिर्फ काइनेटिक ही होगा। तो काइनेटिक क्या होगा? हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ पे जब ये आएगा तो इसको कौन सी एनर्जी होगी? सर यहाँ पे उसको पोटेंशियल भी होगी और काइनेटिक, क्योंकि मोशन में है। बॉडी अगर इसके और ऊपर जा रहा है तो मे बी इन मोशन इन दैट केस। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? एम जी एच प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर। पूछा गया है वेलोसिटी एट पॉइंट बी, तो टेक इट ऑन द अदर साइड। So this is half m va square minus m g. Can I run small h as what? Now see over here, what is cos theta once again? Adjacent upon hypotenuse. Agreed? L minus h upon L. L को कॉमन मैंने ले लिया। अभी h by L को इस तरफ लेता हूँ। 1 minus cos theta हो गया। What is h? L in bracket minus cos theta. Can I substitute this h back over here? हाँ Are you getting it? So now if I happen to consider h की जगह पे L in bracket 1 minus cos theta, and that is equal to half m b square. Friends, यहाँ पे मास कैंसिल हो रहा है, मास कैंसिल हो रहा है, मास कैंसिल हो रहा है। इसका अगर मैं LCM लूं तो 2 आएगा नीचे। ये वेलोसिटी एट a द होल स्क्वायर। यहाँ पे 2gl 1 minus cos theta is equal to vb square by 2. 2 and 2 will get cancelled. Are you getting it? yes sir. So now can I say vb square is equal to va square minus 2gl into bracket 1 minus cos theta. ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया है पॉइंट बी। फिर उन्होंने वो क्या क्या मालूम है, वही पॉइंट हम लोगों ने एक एंगल लिया और ये एक एंगल ले लिया है। यहाँ पे वेलोसिटी निकाला है, फिर दोनों का डिफरेंस ले लिया। इस बार समझ में आ रहा है? मैंने vb निकाला तो ये आंसर आया, आया ना? हाँ अभी सपोज मैंने ये पॉइंट सी लिया तो कैन आई ड्रॉ अ टैंजेंट और कैन आई फाइंड आउट vc एग्जैक्टली ये डेरिवेशन है। हाँ सर। लेकिन ये तो कॉमन ही रहेगा ना, ये तो आंसर सेम ही रहेगा ना। हाँ पोटेंशियल एंड अब जब भी तो डिफरेंस फाइंड आउट करेगा, डिफरेंस फाइंड आउट करेगा तो सी की वेलोसिटी ज्यादा होगी बी से, क्योंकि सी से ए से सी पे जा रहा है, सी से बी की तरफ जा रहा है, तो बी की तरफ उसकी हाइट बढ़ रही है तो वेलोसिटी कम होगी। यस सर। तो डिफरेंस से भी निकालेगा तो वीसी माइनस वीबी निकालेगा। आई गेटिंग इट? हाँ हाँ हाँ। और अगर तू वीसी माइनस वीबी निकालेगा तो किसी भी हाल में वीसी में भी ये इक्वेशन आएगा, वीबी में भी ये इक्वेशन आएगा। दोनों केस में ये इक्वेशन कैंसिल हो जाएगा, सबट्रैक्शन साइन आएगा। And that is why your equation will be in terms of 2gl और दोनों का cos theta आएगा, angles आ जाएंगे। That's why they've written 2gl in bracket cos theta minus cos theta 0. Is this clear? जी सर। Friends, when you're getting this kind of questions, take your time, sit across with it, थोड़ा सा observe करो। मैंने जब ये explain किया था, मैंने सिर्फ एक angle theta की वजह से किया था। जब तुम इसको लेके बैठो तो दो अलग angle लो ना, दो अलग diagram करो और फिर दोनों diagram को merge करो। Take different points and go on to your instincts. And the logic in all the cases remains the same. Sir, Yeah. बोलो। sir, the question number 9 which we did just now, you said that alpha will be tan inverse of 1/3.
बट लेवल 2 में भी ऐसा एक सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, तो उसमें तो आंसर cot alpha is equals to 3 है, तो आंसर करेक्ट क्या होगा? cot alpha is equals to 3 या फिर सर tan? क्वेश्चन सेम है। ऑप्शन के हिसाब Cot से जो यू एम वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं क्या करूँ अभी? आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं क्या करूँ यार? शायद दिस इज, ऐसे कैसे हो सकता है? और वो भी फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए। Isn't it नेहा, अनयता, मिहिर, रुधि? रुधि is laughing. Okay. नहीं, her confusion is absolutely correct. पियो ध्यान से सुनो। Yes, sir. ये तुम हमेशा ना क्या कर रहे हो, कंपेयर मत करो। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है, आंसर भी सेम है, दोनों आंसर सेम है, लेकिन मुझे पीछे वाला आंसर नहीं चाहिए था, क्योंकि पीछे वाले में ऑप्शन वैसे दिया था, इसलिए तुम्हें वहां पे भी हमें वही आंसर मिला था, tan अल्फा ही मिला था। फिर उसको हम लोग ने कॉट में कन्वर्ट किया था, क्योंकि ऑप्शंस वहां पे वैसे दिए थे। वहां पे tan में से वो 3 दिया था, 1/3 नहीं दिया था, इसलिए कॉट लिया। और सबको पता है कि tan अल्फा इज इक्वल टू 1/cot अल्फा, आया ना? 10वीं Yes, में पढ़े sir. होंगे। हमें आंसर क्या मिला है? tan अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच? 1/3 मिला कि नहीं मिला? Yes, अभी sir. हम लोग ने सॉल्व किया तो क्या मिला हमें? तुम वापस देखो, ये वाला 6 वाला मत देखो, अभी हम लोग ने सॉल्व किया तो मैंने क्या लिखा था? क्या लिखा है? Alpha is equals to tan inverse of नहीं, उसके पहले, उसके ऊपर वाला स्टेप, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/3 लिखा कि नहीं लिखा? Yes, sir. फिर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ना, बिकॉज एंगल पूछा था, आया ना? Yes, yes. तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/3, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/3। फाइन इनफ, दैट्स आंसर 0.33। अगर तुम्हें चाहिए पार्ट में तुम, क्योंकि ऑप्शन वहां पे ये प्रॉब्लम की हिसाब से था, ऑप्शंस के हिसाब से नहीं दिया था। अगर तुम चाहते हो तो देखो ना, इसको इक्वेट करो ना, tan अल्फा इज 1/cot अल्फा, tan अल्फा इज 1/3, सो कैन आई से 1/3 if left hand sides are equal, right hand sides are equal, therefore cot alpha is equal to 3. What is alpha? Cot inverse of 3. ये भी सही है, किसने मना किया? Okay, sir. ये थोड़ी बोला कि गलत हो तुम। मैंने किया कि जब यहाँ पे आंसर आ चुका है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/3, तो वापस उसको रेसिप्रोकल लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे वो ऑप्शन वैसे पूछा गया था, इसलिए हम लोग ने वो किया था। समझ में आया? Okay, sir. और वो ऑप्शन के हिसाब से हमने कॉस को ऊपर रखा था, साइन को नीचे रखा था। यहाँ पे साइन को ऊपर रखा और कॉस को नीचे ले लिया मैंने। यो Yes, sir. गेटिंग इट? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ओके, since ये जो compress, if you look at question number 97, sorry, page number 97, students, page number 97, comprehension 3, that is actually comprehension comes for the advanced level. Students, JEE Mains में कभी पूछते नहीं है, NEET में भी कभी नहीं पूछते students, ये comprehension type they ask you for advanced level students, लेकिन फिर भी can anybody crack comprehension 3 का first one students? Only the first one, page number 97. Just try to think, or if you can give me a hint how to go about also, it's more than enough. Friends, is it clear which question I'm speaking about? Yes, sir. You can you read a question? Yes, sir. A road of radius 20 meter is banked for vehicles Very going loud at... and clear. You are a very confident girl, Pio. Don't worry, Okay. बिंदा होता है, पढ़ाई में सब कुछ होता है. Okay, A carry road on. of radius 20 meter is banked for vehicles going at the speed of 10 meter per second. The road Yes. has sufficient friction to prevent slipping. Take G is equals to 10 meter per second square. So the Yes. first... So now what she said, students, radius 20 meters उसने बोला है,
The road is of radius 20 meters. वो banked है for a vehicle going up. Banking किया हुआ है for a vehicle going up at a speed of 10 meters per second. The road has sufficient friction to prevent slipping. Yani students, is it banked along with friction? A band eliminating friction? Yes, sir. हाँ, friction के साथ में है. हाँ, sir. sir. Yes. Are you getting it? And G is 10. Okay, read Q further. So question number 1 is, what will be the direction of friction and magnitude of friction on vehicle when a vehicle of mass 200 kg is negotiating the curve at constant speed of 5 meter per second? Yes. अभी कोई बता सकता है ये है क्या? Yes, anybody? Sir, Sir, solving. ही ना? हाँ थर्ड क्वेश्चन ही ना? हाँ, comprehension third का first one. Sir, Yeah. in the first case, friction will be downwards, right? First case friction will be downwards. What makes you to say that? Means you mean to say for 10 meter per second? Sir, it depends on minimum velocity ना? हाँ, max हाँ. velocity. हाँ, तो उसने नहीं, क्या बोला? क्योंकि यहाँ पे लिखा है sufficient. The road has a sufficient friction to prevent slipping. So that is what? That's a maximum speed or minimum हाँ. speed? Friction नीचे. हाँ, तो वो तो 10 meter per second is what? Is V maximum? शायद से. Absolutely correct. Absolutely correct. और पूछा किसके लिए? 5 meter per second. Yes, sir. तो 5 meter per Yes, second के लिए sir. speed ज़्यादा होगा. It's less than the maximum. Yes, sir. So where is a car coming? Is it coming down the plane or it's going up the plane? Down. If it's coming down the plane, where is the force of friction acting? Will go down. Where is the force of friction acting? Upwards. That means my option has to be between A and B only. Upwards. Option will be A, B or C. Sorry, A, B or D. मेरा C rule out हो जाएगा. I have to just solve and to get the direction of friction. What will be the direction of friction? So I got the answer is upwards and the magnitude of friction. Are you getting it? I need to go for the magnitude of friction on the vehicle when a vehicle of mass so and so is negotiating the curve. The radius remains the same. Students, ध्यान से सुनना. और ये मैंने क्यों क्वेश्चन उठाया? Because many students don't attempt questions of this. वो formulas भूल भी जाते हैं. Vruti, you answered over here. Can you tell me the formula for a car on a circular banked road? A circular banked road considering friction. Okay, if a car is over here and if I say that the car is going with a maximum speed, so if the speed increases, the car is going to slide in this direction. Are you getting it? So now the car is over here. It's performing circular motion. The force of friction will be acting in this direction. Downwards. Now for the same banked road, for the same angle of banking, this is theta. The position of the car, I'll keep it over here. अगर उसका speed decrease होता है,
decreases. The car tries to come down. तो कार यहाँ पे है. Now the path of the car is this. Where exactly the force of friction in this case will be? It's directed upwards. यानी यहाँ पे हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं, मैंने बोला अपवर्ड्स। अच्छा, फाइन. ओके, नाउ यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे V max का फॉर्मूला आएगा और यहाँ पे V मिनिमम का फॉर्मूला आएगा. V max का फॉर्मूला क्या है? Can you tell me? भूल गए? सर रूट RG tan थीटा। सर रूट हाँ, RG tan थीटा। सर नहीं को पूछा। फ्रिक्शन है. क्या कर रहे हो तुम लोग? नेहा, यस सर। So under root इसका RG nu plus tan theta upon 1 minus nu tan tan theta. theta plus mu s upon 1 minus US tan theta. एब्सोल्युटली. ये Vmax का फॉर्मूला है और मैंने सीधा सीधा बता, और हम लोग ने डिराइव भी किया है स्टूडेंट्स इसको. यस सर. सब कुछ डेरिवेशन, और मैंने क्लियरली बोला कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन आएगा तो ये अगर ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी, और ऊपर पॉजिटिव साइन है. वही अगर मैंने V मिनिमम का फॉर्मूला लिया तो V मिनिमम का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट RG sin theta minus Tan theta. ये क्या होगा? एक कौन बर्तन तोड़ रहा है? 1 plus mu s tan theta. Is it clear? yes sir. Yeah. Now what is the question asked? They're asking you is what will be the direction of friction. So direction of friction क्या है? Upwards. Direction of friction upwards. लेकिन मुझे magnitude of friction चाहिए. I gotta get what is the direction of friction and magnitude of friction on the vehicle when the vehicle of mass is given to you. I want magnitude of friction. ये पूछा गया है. Now you should know it how to go about with it. क्या दिया हुआ तुम्हें hints में? क्या दिया हुआ है? Radius कितना दिया? How much is radius given to you? So radius is given to us 20 meters. Read gravitational acceleration कितना दिया? 10 meter per second square. 10 meter per second square. Vmax कितना दिया है? 10 meter per second. 10 meter per second. V minimum कितना दिया है? To get it 5 meter per second. आया ना? Yes sir. Okay, so that's 5 meter per second. In that case, the friction will remain the same in that case in both the cases. 5 meter per second. And what exactly the mass of the car is given to us? 200 kg. 200 kg. 200 kilogram. And theta is given to you. The same angle of banking is given in both the cases. तो अभी क्या करोगे तुम? हाँ students? Students, tell me. सर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट पहले वो डाल दे तो हम इक्वेशन बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं. कौन सा बने? फोर्सेस को फोर्सेस की इक्वेशन से तुम लोगे? हाँ सर, लाइक जो कार पे जो भी फोर्सेस आ रही है नॉर्मल mg तो मुझे वगैरह वो बताओ, सब यहाँ पे तुम्हारा इक्वेशन बना के फिर सॉल्व कर. तो यहाँ पे तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? Sir friction. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? 20 एज रेडियस में. यानी तुम्हारा फोर्स ऑफ स्टैटिक अच्छा ओके, और cos नॉर्मल थीटा था. आएगा, है ना? Yes sir. और उसके साथ में हाँ नॉर्मल यस रिएक्शन, सर. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का भी होगा. Sir perpendicular. हाँ, लेकिन कौन सा फोर्स है? नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट कौन सा होगा? n cos थीटा या n sin थीटा? अगर तुम देखते हो Sir sin theta. हाँ, sin थीटा.
ये n आएगा, ये थीटा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखोगे तो ये थीटा होगा स्टूडेंट्स, तो ये होगा n cos थीटा और ये होगा n sin थीटा। तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन होगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या होगा, और ये दोनों मिला के क्या बनता है, ये दोनों मिला के क्या बनता है, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल। आया ना, Yes, sir. ये दोनों मिला के फोर्स सेंट्रीपिटल। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तुम्हारा n sin थीटा इस तरफ आएगा स्टूडेंट्स, एग्रीड, और फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का कंपोनेंट इस तरफ जाएगा, यहाँ पे सबट्रैक्शन होगा। ये देखो ये थीटा आ गया तुम्हारा, fs cos थीटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। This Yes, minus this will account for mv square by r. Are you getting, students? Yes, sir. Now can you get your answer? Yes. Equating the two forces and then cancelling with the theta part of it, you can get your answer. तो force of static friction मिलेगा, and force of static friction is what? us into n, and तुम्हें पता है m into g, and v is known to you. यहाँ पे कौन सी velocity लोगे, यहाँ पे तुम velocity maximum लोगे, यहाँ पे velocity कौन सी लोगे, minimum लोगे। Are you getting, students? अगर तुम ये फॉर्मूला देखने जाओगे तो ये फॉर्मूला अगर तुम लोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन टीडियस हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर तुम ये फॉर्मूला लोगे। लेकिन ये दो इक्वेशंस अगर तुमने ले लिया, देखो ना यहाँ पे भी तुम n sin थीटा को सब्जेक्ट बना दो, तो ये क्या होगा, mv स्क्वायर बाय r माइनस, यानी तुम एक साइमल्टेनियसली तुम सॉल्व कर सकते हो दो इक्वेशंस को। ये दो इक्वेशंस मिलेंगे, दोनों इक्वेशन को तुम साइमल्टेनियसली ले सकते हो रीअरेंज करके, एंड देन यू ट्राई टू गेट द आंसर अकॉर्डिंगली। यहाँ पे ले सकोगे तो यहाँ पे तुम्हें स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट को निकालो, फिर टेक द रेशियो अकॉर्डिंगली, आरजी कैंसिल हो जाएगा, फिर tan थीटा प्लस ms अपॉन 1 माइनस, फिर तुम्हें शायद कंपोनेंट हो, डिविडेंड हो। स्टूडेंट्स यानी तुम्हें हिंट्स दे दिया है, फिजिक्स पार्ट इज डन विथ यू ऑल, you should know the resolution of the forces properly, you have got the two formulas also correctly, you have got the information also correctly, the data now becomes your maths part of it. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Can I erase it now? Erase करो students? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, sir. Okay, students. Now we go for the next topic with respect to your system of particles, students. Okay. Do keep in mind, students, it's an important topic. System of particles is much more important. Circular motion, yes, one can get the answers easily, but at the same time, students, इसमें formulas ज़्यादा, ये ध्यान में रखना. And you have to be consistently solving it. You can't forget the mathematical relation, students. Okay, so kindly see to it that you make जिसने notes अच्छी तरह से लिखे होंगे, students, those who have made the notes properly and those who are going through the notes regularly, in that case they will be able to work out properly. लेकिन जिसने maintain नहीं किया books को, okay, they can go at a loss. And if in case if we try to write an incorrect information, then that is something really very bad. Okay, so please do take care while you are solving questions onto that. Okay, and mostly I'll be sending you the PDF for circular. Students, I have sent you the PDF for circular motion also, isn't it? Yes, sir. Okay, so kindly practice with those also in that case. Okay. Now, students, let us go for your next topic is system of particles, students. Okay, listen carefully. When are you having your exams? Any exams are scheduled, students? Major test है? नहीं सर, ये चैप्टर पे नहीं है। नहीं, कौन से चैप्टर पे? Circular So motion. circular motion, laws of motion WP. and power energy. Okay, और कब ये exams? 31st of Jan. Oh, so it's hardly 10 days. The students, one thing I wanted to do it to go through all the formulas of this, okay, and try to go through the problems what you have done it,
and go through the PDF which has been sent. Is that clear? Try to crack that. Okay, और consistently revise करो formulas को. Don't just lose it off. तुम consistency अगर रखोगे students पढ़ाई के अंदर, then things are fine. नहीं तो क्या होता है, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, you tend to forget things what you have done it. And please don't compare with the solutions which you need to find out with the previous questions. कहाँ पे थोड़ा सा भी PO, थोड़ा सा भी wordings में change आ गया, values में change आ गया, तो things gets different. और वो जानबूझ के ऐसे करते भी है. I've seen, it's not only you, many students are there, students who उतना memory उनका strong रहता है, they're good in memorizing. तो उनका यानी उनको याद रह जाता है, उनकी गॉड गिवन गिफ्ट है कि थोड़ा सा याद रह जाता है, लेकिन वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस भी देते हैं, ऑप्शंस में भी वही वैल्यू थोड़े से, लेकिन एक वैल्यू चेंज कर देते हैं ऑप्शन में और वो आंसर हो जाता है. और ऊपर से डेटा में भी एक वैल्यू चेंज कर दिया, या तो यूनिट चेंज कर दिया या तो वैल्यू चेंज कर दिया. So don't just blindly do any problems in physics, students. You need to read it very carefully. Again, I'm telling you, if you are going for the exams for the major test, first of all, you should know how many questions you need to. If you're trying to go for all the questions, fine, go with it. But see to that you try to get all correct. SNE, you try to go for all questions, and out of that, you got 15 incorrect. So it's better now when you go for all, you're getting in 15 incorrect. So try to go for certain questions where the correct is more. Your negative markings are not to that extent. ये हमेशा ध्यान में रखना students. Avoid getting negative marking. जरूरी नहीं है कि सारे questions आने जरूरी है students. ये game है. Again, you're not trying to understand what is the studies. Well, still doing like school going में कैसे होते हैं बच्चे स्कूल में कैसे जाते हैं कि 20 मार्क का टेस्ट है तो आई एम गेटिंग 20 and 20 हैप्पी, एक लॉलीपॉप लेके आते हैं घर से, मामा भी खुश हो जाती, मेरे बच्चे को 20 and 20 मिला. ये 20 and 20 वाला खेल नहीं है, ये लॉलीपॉप वाला नहीं है, ये कितने नेगेटिव कम आना है वो वाला गेम है. ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. So always try to getting all answers correct is very good. That you will get it, but it's not like that you'll get it instantly. It takes an ample of time for that. और वो consistency practice में रहोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. तो हमेशा पहले ये देखो कि मुझे कितने correct आ रहे हैं. Always try to increase your positive markings in that case, and that will count a lot. अगर तुम पूरा attempt करने बैठे, fine enough, no problems in that case, absolutely correct. लेकिन उसमें अगर तुम्हें ज्यादा negative आ गया तो तुम्हारा गया काम से. Always try to do that. Vriddhi, I do understand parents are there जिनको full marks के items होते हैं, because parents are not aware about it कि what kind of studies are these. Students, tell your parents that you all are giving the highest level of examinations. Are you getting it? You're not giving an ordinary FY BCom exam, yeah, FY-JC exam, yeah, SY-JC. The preparations, what you're doing it is of a higher level. UPSC is the topmost exams of India. IIT is also the topmost exams of India. All India pre-medical test. AIPMT is also topmost exams. IIT topmost आता है तो उसके बाद में तुम्हारा JEE की जैसे एग्जाम्स आते हैं तो वहां पे नीट की एग्जाम्स आती है, वो एक सेकेंड लेवल है. जैसे यहाँ पे तुम CA के लिए एग्जाम्स होती है, CA को क्रैक करने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए, तो वो वाले एग्जाम्स, लेकिन उनका भी कैटेगरी साइंस से कम ही है. So parents will not understand. Am I getting it? The parents has to be told in that manner. They have to be correctly educated in that case. Of course, they have good knowledge. I'm not saying education in the sense of that. Education with respect to the marking scheme, the paper pattern, ये बहुत important है. एक communication तुम्हारा होना चाहिए. Comparison होगा नहीं, my dear. Comparison तो सबका होगा ना, सारे parents का होगा. लेकिन वो comparison भी, I'm telling you, I know that I'm going slightly out of track. I'm taking some time. लेकिन वो comparison में भी क्या होता है मालूम है? Students see one thing. I'm taking another 2-3 minutes. Very sorry for that. लेकिन अगर तुम comparison देखोगे ना तो कुछ students तुमसे ज़्यादा क्यों आते हैं? Reason क्या है? What is the reason behind it? Reason behind is that first of all, how is the mode of working? लेकिन उसके beyond what exactly did in class 8, what exactly did in class 9, what exactly did in class 10th, ये matter करता है. Students,
नीट को क्रैक करना या जेई को क्रैक करना तुम्हारा 8, 9, 10th के ऊपर डिपेंड। 11th, 12th विल बी ऑटोमेटिकली डन प्रॉपर्ली। अगर जो स्टूडेंट्स अगर जो स्टूडेंट्स 8th, 9th, 10th में फाउंडेशन कोर्सेज करते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी नीट और जेई को क्रैक करने की ज्यादा हो जाती है as compared to those students who simply do 8, 9, 10th of school। एसएससी किया, आईसीएसई किया, सीबीएसई किया, बस उतना करके छोड़ दिया और सीधा 11th और 12th में साइंस में घुस गए और फिर बोलते मुझे नीट और जेई, मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनना है और ये एग्जाम्स देंगे। 11th और 12th, ध्यान तो सुनना, 8, 9, 10 सिर्फ स्कूल लेवल की स्टडीज करके, 11th और 12th करके तुम शायद MHCET दे सकोगे, लेकिन फिर भी नीट पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तुम इंजीनियर बन सकते हो लेकिन डॉक्टर नहीं बन सकते। और ये इंजीनियरिंग इज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, नॉट बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तुम बैचलर ऑफ इंजीनियर बन सकते हो, यू कैन गेट इट इनटू डीजे संघवी, यू कैन गेट इट इनटू थाडोमल, इसमें तो मिल जाएगा, BJTI, इसमें तुम्हें मिल जाएगा बेस्ड ऑन टू 11th एंड 12th। लेकिन अगर जिसने फाउंडेशन कोर्स किया है, अच्छी तरह से, उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट्स हु हैव सिंपली डन स्कूल 8, 9, 10, 10। वो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यानी अभी तुम्हारे लॉकडाउन के अंदर तुम लोग जब भी एंजॉय कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स जब भी एंजॉय कर रहे थे, स्कूल्स नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, सब लॉकडाउन है, एग्जाम्स नहीं, वहीं वहीं दूसरे स्टूडेंट्स फाउंडेशन कोर्सेज के लिए गए हो, और फाउंडेशन कोर्सेज में से अगर तुम्हारा ग्रुप में अगर 50 स्टूडेंट्स में पकड़ो ना, या 30 स्टूडेंट्स पकड़ो, उसमें से हार्डली फाउंडेशन 1 या 2 जाता है, जो बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि उनको इतना बर्डन यहाँ पे नहीं चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बर्डन लेना सीख लेता है, वो 11th और 12th को कोप अप। अभी देखो तुम्हारे 11th और 12th में कैसे तुम्हारा बर्डन बढ़ता है, क्योंकि तुम्हें आदत ही नहीं है, यू नॉट हैबिचुएटेड ऑफ टेकिंग दैट मच अमाउंट ऑफ लोड इन 8, 9 एंड 10th। यहाँ पे तुम्हारे लिए स्कूल लेवल की स्टडीज ही तुम्हें ज्यादा लगती थी, तो ये तो देखो। So students, difference comes over here, but in spite of it, there are certain students who overcome this, हाँ, भले वो फाउंडेशन नहीं करते हैं, उनकी फिर वो रेगुलरिटी रहती है, वो बहुत सिंसियर होते हैं अपनी पढ़ाई के मामले में, उनका टाइम पास कम होता है, एंड यूजिंग ऑफ गैजेट, सेल फोन्स, दे विल थ्रो इट अवे, दे विल नेवर यूज सेल फोन्स इन दैट केस, दे विल यूज अ सिंपल 1000 रुपीज का इनकमिंग, आउटगोइंग एंड 1 टेक्स्ट मैसेज, बस वो फोन लेके बैठेंगे, बाकी दे विल नेवर यूज स्मार्टफोन्स फॉर द एंटायर 11th एंड 12th। घर के अंदर अगर ऑनलाइन सेशंस होंगे तो एक अच्छा सा डेस्कटॉप ला के रख देंगे, और वो तभी यूज करेंगे जब भी चाहिए, उसके बाद उसको शट डाउन। रादर देन गेटिंग पीडीएफ्स, बुक का पीडीएफ वो डाउनलोड नहीं करेंगे, द डैड ऑफ दैट पर्टिकुलर किड विल गो एंड बाय बुक एंड गेट इट, बिकॉज पीडीएफ होगा तो वापस तुम स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हो, तो तुम्हारे डाइवर्जन होने वाला है। तो ऐसे पेरेंट्स होते हैं, वो पीडीएफ में नहीं आते, वो फिर बुक, और वो खर्चा बढ़ता है, लेकिन वहां पे सिंसियरिटी और बढ़ती है। This is the difference between students who are regularly doing it and those students who are casually doing it. And it's a game, students. Try to understand. जो बंदा इसको सही तरीके से समझ लिया will be able to crack it. Okay, students, let's go for system of particles, students. Now, what exactly is system of particles actually speaking about? Students, system of particles actually speaks about concept related to force, concept related to displacement. Listen carefully, students. Displacement of the particle, velocity of particle, momentum of particle, acceleration of particle, and force acting on the particle. हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम बॉडी के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, so can I say a body is considered to be what? A body, if I happen to consider, is considered to be of what? Is considered of several particles inside it. Now, for example, if I say that this particular object is made up of 4 bodies into it, 1, 2, 3, and 4. Okay, and there is another object which has n number of particles in it. What is the difference between the two?
तो उनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो बोलेगा सर एक में ऑब्जेक्ट्स आर अलाइंड इन सच अ वे दैट द मैटर इज इन डिस्क्रीट मैनर. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दिखाई दे रहा है. क्या दिखाई दे रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. तो यहाँ पे मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिस्क्रीट मैनर. और यहाँ पे कंटिन्यूस. Are you getting it? I've given an object placed on a level surface. Let us assume that this particular object is made up of n number of particles. But look at the particles. Friends, can you count the number of particles over here? Yes, sir. So that is what the particles are aligned in discrete manner. जहां पे तुम काउंट कर सकते हो तो वो क्या बन जाता है? डिस्क्रीट मैनर बन जाता है. अगर मैंने पूछा कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट एग्जैक्टली द एंटायर मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, द एंटायर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो तुम क्या बोलोगे? सर ये पहला पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल, ये चौथा पार्टिकल, तो सबका मास मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे एक टोटल मास मिल जाएगा. ये forget about this empty space. स्टूडेंट्स ऐसे सोचो कि पूरा एक पार्टिकल एक मैटर बनता है, ऐसे सोचो. तो ये चारों का मास ऐड करके तो कहना है ये डिस्क्रीट मैनर में तो हम काउंट कर सकते हैं ना. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अलजेब्रिक सम. ये क्या है? अलजेब्रिक सम ऑफ mi. Students, the variable I stands for ith particle, where I stands for particle 1. How many are there? 4. अगर वो n number of particles हो जाते हैं लेकिन तुम काउंट कर सकते हो तो वो n आ जाएगा. What is algebraic sum of mi? This is lower limit and this is upper limit. Students, the word lower limit and upper limit is more precisely used in integration, definite integrals. लेकिन यहाँ पर भी तुम बता सकते हो तुम्हारा फर्स्ट पार्टिकल एक है और तुम्हारा n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. यानी मैं क्या कर रहा हूँ? इट्स सिंपली आई एम एडिंग m1 प्लस m2 प्लस ब्ला 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 प्लस mn. इन सबको मैं ऐड कर देता हूँ तो व्हाट एग्जैक्टली दैट बिकम्स मास ऑफ ऑल द पार्टिकल्स. बट कैन यू काउंट? Discrete manner में yes, you can count the number of particles. Continuous manner में can you count? No, you cannot count the number of particles because all the particles are very closely and compactly placed. तो यहाँ पे तुम्हारा मास क्या होगा? Algebraic sum of mi. यहाँ पे तुम्हारा मास कैसे होगा? अगर मुझे यहाँ पे मास चाहिए तो तुम क्या बोलोगे? तो यहाँ पे तो continuous manner है. अगर सपोज स्टूडेंट्स मैंने तुम्हें पूछा okay, can you count the number of hair PU has it on a head? PU, can your friend count the number of hairs which you have on your head? No, sir. है ना? और कितने लंबे बार और हर एक को काउंट करने के लिए द पर्सन विल गो क्रेजी. एक काउंट करे तो दूसरा छूट जाएगा, दूसरे को काउंट करे तो तीसरा छूट जाएगा, एक को 3 दफे काउंट होगा. तो कैनॉट बिकॉज दैट इज इन कंटिन्यूस मैनर. लेकिन अगर वही मैं अगर पूरा टकला हो गया होता, CPU, when I take an example, see what kind of an example I'm taking it for myself. And I have only 4 hair. No, now you laugh onto this. है ना? Now you laugh onto this. And when I speak about your example, you feel it awkward. Why is he saying like that? Friends, when I have 4 hair onto my head, can you count the number of hairs? Yes, why not? You're counting it. You are able to count it. क्योंकि वो discrete manner में है. लेकिन continuous manner में हम लोग count कर सकते हैं? नहीं कर सकते students. तो वहां पे अगर मुझे एंटायर मास चाहिए तो मैं क्या करूंगा? सर वहां पे अगर एंटायर मास करते तो ऐसा करते हैं ना सर, इंटीग्रेशन ऑफ dm. यानी आपने बोला है हर एक इन कंटिन्यूस मैनर. सर ईच मास इज इनफाइनाइटेसिमल. स्टूडेंट्स, द बॉडी इज मेड अप ऑफ, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, बॉडी इज मेड ऑफ infinitesimal masses. Since the body is made up of infinitesimal masses, छोटे छोटे masses, उन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो वो क्या बन गया? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम. यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम जहाँ पे स्मॉल m विल बी इक्वल टू 0, तो स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M.
Students, मुझे बताओ, what is integration of dx? What is integration of dy? कोई बता सकता what is integration of dx? पढ़ा है कि नहीं? Calculus x. What is integration of dy? Students, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? Yes, sir. Yes, sir. अरे वाह, देख तेरे संसार की हालत। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैलकुलस यूज होगा, यहाँ पे कैलकुलस यूज होने वाला है। अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर भले तुम्हारा टॉपिक कैलकुलस नहीं आ रहा है एग्जामिनेशन में, डोंट लीव दैट, go on consistently revising the formulas, go on consistently solve those identical questions again and again, doesn't matter. Students, there is a memory based test also, whatever exams you're giving it right now. Now, for example, you must have given laws of motion earlier, you must have given vectors test earlier. One fine day, randomly sit with the same paper. अगर तुम्हारे पास कोई paper हो तो randomly you sit with the same paper and try to crack it again. Are you able to score the same number of marks? Are you able to score full marks? नहीं, तभी भी नहीं होगा क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। स्टूडेंट्स, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में ग्रोथ को नहीं देखते, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में थोड़ा सा ग्रोथ होगा, कंसिस्टेंट रहो, फिर वापस ग्रोथ थोड़ा सा, देन अगेन कंसिस्टेंट, देन अगेन ग्रोथ, देन अगेन कंसिस्टेंस। This game is more of consistency. A person who goes sharply up has a tendency to come sharply down also. तो कहाँ पे तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आएंगे, कहाँ पे तुम्हारे मार्क्स कम भी होंगे, तो वो देखना है टॉपिक के हिसाब से जा रहे हो या कंसेप्ट के हिसाब से, क्योंकि ये टॉपिक है, ये टॉपिक मेरे को नहीं जम रहा है, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग डाउन। लेकिन वही अगर दूसरा टॉपिक होता फिजिक्स में, आई एम एबल टू स्कोर ओवर दैट। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम वेरी स्मॉल है, लोअर लिमिट क्या है? 0, कैपिटल एम, m minus 0 was the answer. So what is integration of dm? Since we are trying to go for where students have taken two such objects, जहाँ पे एक केस में discrete manner में और एक केस में continuous manner है। Now students, अगर मैंने suppose इस object को move कराना है students, और इस object को move कराना है, तो what should I do? So you have to give an external unbalanced force. अगर मैं ये ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स में देता हूँ, फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को, तो स्टूडेंट्स व्हाट हैपेंस? और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था, इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, and both of them are placed on the level surface, students. If I want them to move, students, I'm trying to give an external unbalanced force. यहाँ पे मैं unbalanced force दे रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है, वो फोर्स क्या एक्ट हो रहा है? The force is made to act on the first particle, second particle, third particle, fourth particle. That means the force is getting equally distributed to all the discrete particles together. That is why the net force, students, agar main pucha what is the net force acting on the body? Students, the net force acting on the body is equal to, listen carefully, algebraic sum of mi, I equal to 1 to I equal to n into the net acceleration possessed by the body. Again, I say force is equal to
Mass into acceleration. Yes, sir. क्या ये क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे डिस्क्रीट मैनर में, यहाँ पे क्या कंटिन्यूस मैनर में। अगर मैं सोचो अगर मैंने छोटा सा पार्टिकल लिया, उसका मास दिया मैं, अगर ये पूरा बॉडी, ये पूरा बॉडी अगर जाता है विद एन acceleration of 5 meter per second square. So students, what about each particle? Each particle is also moving at 5 meter per second square, students. हर एक पार्टिकल is set to move. ये कंसेप्ट कैसा मालूम है स्टूडेंट्स? ध्यान से सुनना. सपोज अगर तुम ट्रेन देखते हो, कैन आई कंसिडर ट्रेन टू बी एन एंटायर बॉडी? यस, इट्स एन एंटायर बॉडी. ये सारे बोगीज है. These are all the constituent particles. These are all the constituent particles, students. अगर ये ट्रेन का मैंने स्पीड दे दिया स्टूडेंट्स, अगर ये ट्रेन का स्पीड मैंने दे दिया 100 kmph, तो मुझे ये बता सकते हो ये जो व्हील है उसका स्पीड क्या होगा? सर उसका भी 100 ही होगा ना. ये जो बोगी है उसका स्पीड भी क्या होगा? 100 ही होगा ना. यानी ये पूरा बॉडी इज गोइंग विथ 100. पूरे बॉडी का मास कैपिटल M. The entire body is going with same velocity. So can I say each constituent particles also will have same velocity and all of them will be in the same direction? Sir, they won't be 25-25. मतलब ऐसे distribute होके. देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान. You, that means you mean to say that you are running with 10 meter per second. So you mean to say your right leg is moving with 5 meter per second and your left leg is moving with 5 meter per second? Huh? No, sir. Each and every part we consider as each constant particle will move with the same speed. The entire system is set to move in the forward direction with the same speed. अगर तुमने स्पीड डिक्रीज कर दिया तो लैग हो जाएगा. So motion of the entire body in the forward direction also contributes to motion of each particle also in the same direction. If the entire body is moving with the velocity of so and so, each constant particle is also moving at the same so. If the entire body is going with an acceleration so and so, each constant particle also with the same acceleration. हाँ sir, समझ आ गया. The momentum also remains same in all the cases. See your mom, she's shouting at you because you're asking this weird question. Enough you ऐसा कोई क्वेश्चन पूछती है? नहीं पूछो, doesn't matter. It's good क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन दूसरे की भी डाउट्स हो सकते हैं. And बिंदास पूछने का. Students, nothing to worry about it. Serious question होगा तो भी बिंदास पूछने. No need to worry. हाँ लेकिन वो बात है कि mom shouts. तो ये क्या था तुम्हारा? Students, ये पूरा discrete manner में, ये continuous manner में. तो यहाँ पे तुम्हारा देखो, यहाँ पे तुम्हारा अगर मैंने सबसे ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, अगर मैं छोटे मास के लिए बताऊंगा तो कैसे मैं फोर्स अप्लाइड ऑन टू इट विल बी dF. Agreed? Mass of the particle is dm, but is that particle is going to go with small acceleration? No, its acceleration will be a only. I getting it? ये तुम्हारा formula है. Force is equal to mass into acceleration. Now when I speak about net force के लिए, तो go for integration. Go for integration. तो यहाँ पे क्या होगा? 0 to F, 0 to capital M. What is integration of dF? F. Is acceleration constant? Yes. What is integration of dm? M. What exactly force will be? Mass into acceleration. Are you getting it, students? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. When I speak about system of particles, students, we say that how is the first of all mass distributed? The mass can be distributed in discrete manner or the mass can be distributed in continuous manner. In discrete manner, always use algebraic sum. In continuous manner, always use the integration, students. Okay. Second point to be taken care of. If the entire body is set to move with a velocity v, are you getting it? Then each constituent particle also will have same velocity. If the entire system is moving with an acceleration, each and every constant particle also will have same acceleration. Can I erase this part, students? No, sir. Just No, a sir. minute. If you're writing it, students, ये पहला लिखना, बाद में ये बताना. पहले ये distribution of mass लिखो, ये part लिखो, फिर ये गाड़ी ड्रॉ करना तो करो ना तुम, और फिर यहाँ पे जाओ, students.
Many seats are vacant in engineering, Bachelor of Engineering in Mumbai. 10% और reduce हुआ है last year से. And the number of students, the strength for appearing JEE Mains also had reduced. It is almost always pandemic के पहले होता था 2019 के आसपास से भी था. Used to be 9.5 lakhs. At times it has gone to 12 lakhs also. Students appearing for JEE Mains. Whereas for advanced it was 2.5 lakhs. Lekin for last 2 years the number of students have reduced. In spite of government ने क्या किया है 1920 can appear, reappear, 2021 can reappear along with 21-22. So those students who are going for 22 also, these people will appear with you all. There will be number of students are less because of this pandemic. Because बहुत students का concentration चला गया, टाइम पास होना शुरू हो गया, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, फ्रेंड सर्कल ज्यादा हो गया है, व्हाट्सएप पे ज्यादा हो गया है, पढ़ाई छूट गई है और रीजंस बोलते हैं ऑनलाइन का रीजंस नहीं है. उल्टा ऑनलाइन इज द मेथड वेयर यू आर डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग. You feel like that कि somebody sitting next to you and teaching you. But still, this year the number of students who went for JEE Mains was just 6.5 lakhs. And advanced 1.5. Oh, Vruti, very good. Very good. How much she scored, Vruti? Percentile in mains? Somewhat like 97 something she scored. Very good. And where she was studying? She was So in she different was in Mindsetters. Mindsetters. A year ago, I was over there. I left in 2020 over there. Huh? So your sister must have learned वहाँ पे. Oh. It was in Villepale Mindsetters. I used to handle Villepale Mindsetters. Actually, my brother and sister both gave together. Okay. Both And what? of them were in Mindsetters only. Okay, mindset. Brother का क्या है mindset My इसमें? brother also, but he did architecture. Okay, fine. And did you give Brother advance? was doing architecture, sister was doing engineer. So did your sister give advance then later on? No. Okay. So now what She she just did, gave mains. and she gave CET. She got the admission now. Yes, she gave. Where? She got Where? somewhere in Gujarat, Vadodara. I don't remember the institute ka name, but I'll let you know. Okay, it's an NIT. I think so. Wait 1 second. Okay, fine. Done, sir. ये मैं बोल रहा हूँ students, अगर those people who are going for engineering also, students keep an wide open. Did your sister give bits? Vruti? Did she give bits exams? Yes, sir. Did your sister give bits exams? No. ये बहुत गलत किया है. अगर और तुम ध्यान में रखना Vruti. You are also going for engineering? Yes, sir. You should give bits. Bits को भूलना नहीं है. Bits के dates miss मत करना. Students, I'm giving you just 2 more minutes. The answer सुनना students. If you are not getting an IIT Mumbai CS, if you're not getting IIT Delhi CS, if you're not getting IIT Madras CS, if you're not getting IIT Kharagpur CS, if you're not getting IIT Madras CS, if you're not getting NIT Trichy CS, if I am not getting NIT Suratkal CS, then you should go for bits. Students, if you are not getting computer science in the first 5 IITs, उसके लिए rank चाहिए less than 1500 के अंदर. और अगर NIT में CS चाहिए in Trichy is number 1, you should get 99.7 percentile in JEE Mains. 99.7 percentile से ऊपर चाहिए तो तुम्हें मिल सकता है. अगर ये साथ में नहीं मिलता, then you should go for bits exams, and bits के अंदर CS you should try to get it in Pilani.
Second, Hyderabad. This is very, very important, which most of the students are not thinking about it. Okay, this is very important for you. You should not miss out the dates. Lots of examinations are there. और मेडिकल के लिए तो तुम्हारे दो ही हैं, AIPMT और NEET. And students from mindsetters के अंदर भी I was in Vilaypala in that case. लेकिन वहाँ पे भी dissatisfaction है ही students. It's not like that they are completely satisfied. But the mindset में pressure ज़्यादा होता है. Pressure नहीं है, वो monotonous है. Monotonous pressure का मतलब monotonous है. Monotonous in the sense is they try to throw themselves more onto it. एक ही चीज को बार-बार उनको करने के लिए बोलते रहते हैं. It's यानी क्या हो गया, मतलब more of memorizing हो गया. इतने questions करा के लेके और वो खुद थोड़ी check करते हैं. The peon stands outside and he's checking it. I used to also give work. एक पैटर्न रखा हुआ था कि ये क्वेश्चंस वापस सॉल्व करके आओ एंड द पीयून यूज्ड टू चेक इट. तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फोन के ऊपर एक्सचेंज कर देते हैं, लिख के आ जाते हैं. पीयून को क्या पता है कि सही है कि गलत है. और फिर कंप्लीट नहीं होता था तो लेक्चर्स के बाद में उनको बिठा के रखते थे. और वो बिठा के रखने में उनका जो डीपीटी होता था, डेली प्रैक्टिस टेस्ट होता था, उसमें भी वही प्रॉब्लम है. डेली प्रैक्टिस टेस्ट में स्कोर नहीं करो तो बिठा के रखो. ये मोनोटोनस हो गया. स्टूडेंट, दिस इज एक्चुअली डोंकीज वर्क. Okay, students, let's come back. Every institute have their own way of working, students. Okay, it's not I'm cribbing about it. I've worked over there. All of my good friends over there also. Okay, now listen carefully, students. System of particles. Now, when I speak about system of particles, the first concept what I'm going to speak about is center of mass. COM. Okay, when I speak about for center of mass, students, what exactly a concept of center of mass you're trying to put forward, students? अगर center of mass के बारे में तो बताना है तो what exactly it is? Since a point where the entire mass of a body is supposed to be concentrated. So when I see about it, a point where entire mass of a body is supposed to be concentrated. Since a point where the entire mass of a body is supposed to be concentrated. Okay. And the forces acting on each constant particles were directly applied to that point. Yani forces acting kahan pe? Forces acting on each constituent particle is actually applied where? Constant particle were directly applied to that point. यानी ये जो पॉइंट है जहां पे मैं पूरे मास को एक सम करके ले सकता हूं और उसी पॉइंट पे मैंने सारे फोर्सेस को ऐड कर दिया तो वो बन गया सेंटर ऑफ मास. सो अगेन इफ आई से there is particle 1, particle 2, particle 3, particle 4, particle 5. Let us say सबके मासेस सेम है. स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, ये डायग्राम को ध्यान से देखो. स्टूडेंट्स मुझे बताओ कौन से पार्टिकल्स में क्लोजनेस ज्यादा है? तो मुझे सर ये 1, 2, 3, 4 के अंदर क्लोजनेस ज्यादा दिखाई दे रहा है ना. 3 थोड़ा सा स्कैटर्ड अवे है लेकिन 1 के साथ में. तो कैन यू टेल मी इनका जो पूरा मास मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है तो किस तरफ होगा? विल द टोटल मास विल बी कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स 1 and 3 or will it be more concentrated towards 2, 5 and 4? 2, 5 and 4. सिंपल है. तो यहाँ पे मैं अज्यूम करूंगा ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट मैं पॉइंट P, अगर मैं सपोज मैंने पॉइंट P ले लिया
यहाँ पे मैंने इसको मैं पॉइंट P ले लिया, तो ये जो मेरा पॉइंट P है वो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास, where the entire mass of a body is supposed to be concentrated. assumption ये है, यानी अगर मैं M1, M2, M3, M4, M5 को ऐड करूंगा तो मुझे कैपिटल M मिलेगा। दूसरी बात, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी से अगर मैंने सपोज अगर मैंने ये बॉडी को मैंने फोर्स अप्लाई किया तो एक्चुअली वो फोर्स किसको लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन द थर्ड पार्टिकल, force acting on the fourth particle, force acting on the fifth particle. So indirectly the net force is acting where? It's directly applied where? To that point. ये जो force है, it's acting exactly at that point. And therefore the entire system is set to move in the forward direction. So can I say your net force is actually the summation of all the forces acting? The net force acting is equal to what? Is equal to summation of F1 plus F2 plus F3 plus F4 plus F5 सबका addition. That becomes, this point is called as your center of mass. क्या ये clear हुआ? Yes, sir. So now when somebody asks you what exactly center of mass is, students, center of mass is the point where the entire mass of a body is supposed to be concentrated, students, and the forces acting on each constant particle were directly applied to that point, students. Okay, that's the center of mass. Now when we speak about further, students, when we speak about further ahead, you have one more concept coming as center of gravity. Students, can you tell me what exactly center of gravity is? सर अगर नॉर्मल रिएक्शन और mg को साइमल्टेनियसली कंसीडर करेंगे तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो गए वो पॉइंट बोल सकते हैं। Intersect, in the sense I didn't get you. Intersect का मतलब मतलब जहाँ से उनका ओरिजिन होगा, जहाँ से उनका ओरिजिन होगा। हाँ मतलब दोनों अपोजिट वेक्टर्स है ना एक तरह से, तो हाँ, फिर तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में डिफरेंस नहीं होता है, दे आर एक ही पॉइंट है, लेकिन ये दो अलग टर्म्स क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पे हम बोलते हैं एंटायर मास इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पे पॉइंट वेयर weight of body is concentrated, यानी यहाँ पे ग्रेविटी के बारे में। Since center of gravity is a point where the entire weight of body is concentrated, that is what we call a center of gravity, students. So students, center of gravity is a point where the entire weight of a body is supposed to be concentrated, और यहाँ पे entire mass of the body is supposed to be concentrated. फर्क दोनों में यही है कि अगर मैंने बोला entire weight of the body is to be concentrated in order to maintain, ध्यान से सुना, in order to maintain what? Translational or rotational equilibrium. Students, concept of center of gravity बहुत सारे students ने 10th standard में पढ़ा होगा, शायद students of ICSE and IGCSE ने तो 110% पढ़ा chapter 4 में। Students, center of gravity is a point where the entire weight of a body is supposed to be concentrated. And why is it so? In order to maintain translational rotational equilibrium. Translational equilibrium का मतलब क्या? The algebraic sum of net force acting on the body is equal to 0. The body is in equilibrium. If algebraic sum of net torque acting on the body is equal to 0, then in that case it is rotational equilibrium. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अभी देखो हाउ इज इट लेट अस गो फॉर लॉज ऑफ मोशन। एक सिंपल कंसेप्ट में लॉज ऑफ मोशन कर दे रहा हूँ इसके लिए। स्टूडेंट्स ये सोचो कि ये कार जा रही है, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, ये कार जा रही है, द कार इज गोइंग ऑन अ लेवल सरफेस। स्टूडेंट्स ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे जा रहा है, मुझे बताओ ये कार का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा? तुम बोलोगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट है
जहाँ पे एंटायर वेट ऑफ अ बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, तो क्या मैं उसको यहाँ पे ऐसे लोकेट कर सकता हूँ सीजी? हाँ स्टूडेंट्स, अभी Yes, लॉज sir. ऑफ मोशन हुआ था, लॉज ऑफ Yes, मोशन sir. हुआ, कभी सर ने सीजी वर्ड यूज किया होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हाँ, फोर्सेस को एक्ट करने के लिए सर मतलब सर द फोर्स इज डायरेक्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्टिकल डाउनवर्ड्स, द फोर्स डायरेक्टेड परपेंडिकुलरली पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाँ या ना? तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज? सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी ये तुम्हारा एक पॉइंट है, तो यहाँ से तुम्हारा देखो mg नीचे की तरफ जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सरफेस से ऊपर की तरफ गया, ये दो फोर्सेस हो गए, mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ। अभी मैंने इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर दिया, उसका मतलब सारे फोर्सेस मिला के जीरो होना चाहिए स्टूडेंट्स। देखो ऊपर कौन सा फोर्स जा रहा है? नॉर्मल। नीचे कौन सा जा रहा है? mg। ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? y एक्सिस। इस फोर्स स्केलर और वेक्टर? इस फोर्स स्केलर और वेक्टर? हाँ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? आर यू ऑल देयर? Yes, sir. इस फोर्स स्केलर और वेक्टर? Sir, scalar. स्केलर। Yes, sir. फोर्स स्केलर है। मैं यार अब तक मैं फोर्स के ऊपर क्या वर्ड डाल रहा था? मैं वेक्टर डाल रहा था ना। क्या कर रहे हो तुम लोग? फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट्स। इजार हाँ सर। क्या कर रहा है? आंसर नहीं दे रहा है। रुद्धि हाँ sir, vector. Sorry. Yes, sir. क्या कर रहे हो तुम लोग? Sir, vector. तो ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बैलेंसिंग फोर्स है। अभी सपोज मैंने बोला कि कार आगे की तरफ जा रही है तो देयर इज अ फोर्स एक्सर्टेड, तो ये अगर मैं इसको अप्लाइड फोर्स ले लूं तो पीछे कौन सा फोर्स जा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स है ना। Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों, अभी सपोज मैंने बोला कि गाड़ी अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो आगे वाले फोर्सेस दूसरे वाले पीछे वाले फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं। तो देखो ना, ये फोर्सेस कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे है, आया ना? Yes, sir. ये फोर्सेस वाई एक्सिस पे है। तो अगर एक फोर्स मैंने प्लस एफ लिया है एक्स एक्सिस पे, दूसरा फोर्स मैंने माइनस एफ लिया है, द टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको यहाँ पे लूंगा तो कहने से टोटल फोर्स जीरो हो गया। Yes, sir. टोटल फोर्स जीरो हो गया कि नहीं? तो ये कौन सा फोर्स है? समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो। वैसे ही ये फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको यहाँ पे ले लूं तो n प्लस mg क्या बन जाएगा? जीरो। तो ये फोर्स y एक्सिस पे है तो टोटल फोर्स जीरो हुआ, तो कहने से समेशन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0. 0. बट इज द बॉडी एट रेस्ट? नो, द बॉडी इज गोइंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। बॉडी इज गोइंग विद व्हाट? Uniform speed. So such a point where the entire weight of a body is supposed to be concentrated and where we can maintain what kind of equilibrium? Translational equilibrium. इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। Such a point is called a center of gravity. वही रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है। अभी ये तुम लोग ने 10th में ही पढ़ा है। सपोज अगर तुमने बीम बैलेंस लिया स्टूडेंट्स, देखा बीम बैलेंस? अ सिंपल रॉड। अगर सपोज मैंने ये पेन दिया स्टूडेंट्स, अगर मैंने पेन दिया, मैंने बोला कि पेन को बैलेंस करो स्टूडेंट्स, आई एम बैलेंसिंग दिस पेन। नाउ सी, मैंने बैलेंस करके रखा हुआ, तो कहने से वेयर एग्जैक्टली आई एम बैलेंसिंग इट? आई एम Center. बैलेंसिंग इट बिटवीन Center of. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी हुआ क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक नाइफ एज रखता हूँ जिसको मैं बोलूंगा फल्क्रम, नाइफ एज फल्क्रम पाइवोटेड एंड, तो देखो ना स्टूडेंट्स, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। तो ये जो रॉड है उसका मास यहाँ पे है, ये रॉड का मास यहाँ पे है, और मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आ रहा है? ये दोनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ना ही रॉड क्लॉकवाइज जाएगा, ना ही रॉड एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ना ही रॉड एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ना ही रॉड क्लॉकवाइज जाएगा। बॉडी इज एट व्हाट? बॉडी इज इन रेस्ट। कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? रोटेशनल Rotation. इक्विलिब्रियम हुआ। आया ना? Yes, sir. sir. तो दोनों में फर्क क्या है? सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में सिर्फ एक फर्क है कि यहाँ पे हम एंटायर मास ऑफ अ बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड वन पॉइंट, और यहाँ पे एंटायर वेट ऑफ अ बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड वेयर
where one can understand the concept of translational equilibrium and rotational equilibrium. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Yes, sir. Now if I ask you, are center of mass and center of gravity are two different? Are they two different concepts, or they are one and the same? Students, is COM and CG, are they two different points or they are one and the same point? Same point. Sir, Same point different. तो मैं अलग अलग नाम देता ही क्यों? Sir, different. अगर सेम पॉइंट होता इज़हार तो मैं अलग अलग नाम क्यों देता? हाँ इतना सर, बर्डन क्यों बढ़ाता? different. नहीं, मैं अलग अलग क्यों इतना तो मैं एक्स्ट्रा टेंशन क्यों देता? तो इसको भी मैं COM ही बोलता ना. So are they same or they are different? Different. Different. Okay, students, they are same. सर Students, इतना कंफ्यूज क्यों अरे सर, करते हो? सेम किसके लिए मालूम है स्टूडेंट्स? क्योंकि जो भी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करते हैं स्टूडेंट्स हम जो भी प्रैक्टिस में लाते हैं ना क्वेश्चंस, हम सारे ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. यानी स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. फॉर पॉइंट मास ऑब्जेक्ट्स, center of mass is equal to center of gravity. कौन से ऑब्जेक्ट्स? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट्स. यानी फॉर एग्जांपल अगर तुम देखोगे, एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूं इसके लिए, तो ये देखो, सपोज अगर मैंने ये अर्थ ले लिया, कहने से अर्थ इज अ ह्यूज मास, कैपिटल M, है यस ना? सर. उसका मास कितना है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम. सुन, इस अर्थ के ऊपर अगर तुम PU को देखोगे, ओके, तो कहने से in comparison to earth, can I say PU is an infinitesimal mass? Yes, sir. Yes, sir. Do you see PU का mass is 6 × 10⁻24 किलोग्राम? हाँ स्टूडेंट्स, नहीं ना? No, sir. हाँ, एक मिनट, बुद्धि क्या बोल रही है? सर मैं बोल रही थी पीहू दिखेगी भी नहीं. अच्छा, फाइन. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, if I compare with an object, students, if you see a mass, the mass is very small. उसका मास बहुत स्मॉल है इन कंपैरिजन टू अर्थ को देखोगे तो. मैं अपने आप को भी देखूंगा तो आई एम ऑफ स्मॉल मास, लेकिन कंपैरिजन किससे कर रहा हूँ? अर्थ. तो व्हाट डू आई कंसीडर दिस ऑब्जेक्ट टू बी? व्हाट डू आई कंसीडर PU टू बी? अ पॉइंट मास. व्हाट डू आई, अगर मैं खड़ा रहता तो व्हाट एग्जैक्टली ऑन अर्थ सरफेस मी आई विल कंसीडर एज अ पॉइंट मास. अगर मैं अपने आप को पॉइंट मास बताता हूँ, अगर मैं अपने आप को पॉइंट मास बताता तो बताओ मेरा COM और CG क्या होगा? व्हाट इज माय सेम. COM? सेम. अगर मैं हूँ तो मेरा COM और CG क्या होगा? If I'm standing on the earth surface, students, so where exactly my COM and CG? Students, my COM and CG is my navel point. यहाँ पे मैं CG भी बोल सकता हूँ, COM भी बोल सकता हूँ. समझ में आ रहा है यस स्टूडेंट्स? सर. यानी जितने भी तुम प्रॉब्लम्स, अभी शायद तुम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम्स क्या होगा, या तुम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में तुमने बॉडीज देखा होगा, तो वहां पे शायद सर ने बोला हम इसको पॉइंट मास लेते हैं. अभी फॉर एग्जांपल मैंने जब ये डेरिवेशन किया था वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी मिनिमम कार ऑन अ बैंक रोड, तो वहां पे मैंने पूरी कार नहीं ली थी, मैंने कार को पूरा एक पॉइंट मास ले लिया था. समझ में आ रहा है? सो दैट पॉइंट मास, सो दैट वी कुड गेट द फोर्सेस इजीली. तो वहां पे मेरा COM एंड CG आर कॉन्करेंट इन दैट केस. एग्रीड? यस सर. Yes, sir. Okay. लेकिन अगर इस अर्थ के ऊपर अगर मैंने एक बड़ा सा पिलर कंस्ट्रक्ट किया इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर्स. इस अर्थ के ऊपर अगर मैंने एक बड़ा सा पिलर कंस्ट्रक्ट कर दिया 6400 किलोमीटर इक्वल टू द रेडियस, तो उस ऑब्जेक्ट का क्या COM एंड CG एक ही होगा? नो सर. No, नहीं, sir. क्योंकि अभी उसको हम पॉइंट मास नहीं लेते हैं. तो वहां पे सेंटर ऑफ मास क्या होगा? उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर. और सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी स्लाइटली लोअर, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स अ हेवियर बेस. अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी मोर हेवी. Are you getting it? So COM and CG are concurrent. They are same for what? For point mass objects.
Both of them are the point where the entire mass is concentrated, where entire weight is also concentrated. These points can lie into the matter or can lie outside the matter also. Can lie inside the matter or can lie outside the matter also. COM can lie inside or outside. CG also can lie inside or outside the matter. Is this clear, students? Yes, sir. Next lecture will be continuing further as well. Okay, students? Okay, sir. Sure. Bye. Take care. Thank you, sir. Have a good day. Bye, sir. Thank you, sir.